Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. A very warm welcome, everyone. Bada impromptu life, with no context, no reason, and no planning. Simply because social media pe jo chal raha hai, it really becomes very important for people to kind of take some action against certain things. Isliye I wanted to do this live, and I would love each one of you to kind of take action. Rashmi ji, पहली बात let me make sure I am mute on other options. Okay, so yes, so why I'm asking that question? What is wrong with people? Because uh, end of the day, there could be differences. There could be difference of opinions. There could be, difference of ideology, and nobody is asking anybody to be on the same page. You can agree to disagree, disagree to agree, no matter what. Uh, विभोर के बारे में ये सेशन नहीं, विभोर के बारे में हम बात भी नहीं अभी कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया पे। अभी मैंने देखा जो 1 घंटे पहले, Saffron Tiger, whatever Saffron Tiger is doing, no matter what he's doing, how he is doing, whatever he is doing, there is no reason for bringing, his kid to this whole muck. Uh, मैंने अपना, I'll be more than happy to even actually share my screen, and for people who really don't know, uh, I really, really want everyone to understand one thing. Actually, I should definitely do that. क्योंकि लोगों को शायद पता नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि why are we here or what are we talking about. This session is not about Vibhor, and I'll be very honest about that. This session is only and only about what is happening on social media. लोग कैसे बच्चों को भी आज की डेट में नहीं छोड़ रहे, and I'm really, really surprised. So let me just share my screen and show you exactly what has happened. And looks like Saffron Tiger has deleted his social media handle, which is understandable. Uh, so let me do this. Okay. So for people who really don't understand what has happened, I will kind of show you exactly what happened. This time pay looks like Saffron has deleted his account, which is understandable, as I said. But at the same time, this is what this person had the audacity to write. Saffron, if similar thing, murder, will happen to your own girl child in future. Guys, I really want to be very respectful. I really want to be very mindful around this. Let me be on the screen as well. So, no matter what, how much hatred you have for anybody, it's completely okay. I also don't like Salman Khan. I also don't like Akshay Kumar. I also don't like so many people. Uh, but still, all I'm here for is, on social media you cannot involve my kids, anybody's family. Yes, there have been things that have been done in the last 24 hours. Do I agree? No, I don't. Do I support? No. Do I endorse them? No, I don't. End of the day, you can hate anybody. मैं वही एग्जांपल दे रहा था अभी। मैं I went to the well तमिजान के प्लेटफॉर्म पे. uh, as much as I don't like, or hate might be a stronger word, but as much as I don't really appreciate what Akshay Kumar has done, will I ever say bad things about Akshay Kumar's son? Yes, if he has done something wrong, if he does something wrong in his future, I will. Definitely, I will speak against Akshay Kumar's son. But just because what Akshay Kumar has done doesn't mean that I will say, hope your kid dies. I will never ever say that. यहाँ पर, whatever wrong Saffron has done, that's absolutely fine. You can troll him. I've been trolled. I am still being trolled. I will always be trolled. I would think even his session pe bhi I will be trolled, which is absolutely fine. Please go ahead and do that. Don't involve my wife. Don't involve my kids. There have been things in the past where my family was involved, and I did part ways with certain people. I have taken, kind of stern action against that. इस तरह के comments लिखना for your girl child in future, a similar thing, murder will happen to your own girl child.
Can you imagine what a father or what a parent would feel like? सो किसी की फैमिली के बारे में मत लिखो यार। सुशांत की फैमिली के बारे में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ट्वीट पिन भी था बहुत देर के लिए, बट नाउ आई वन पिन्ड इट। बट विभोर आनंद, व्हेन ही स्पोक अबाउट द फैमिली फॉर सुशांत, I was the first one to kind of take action against that. No, do not involve family. Do not. We are really kind of disrupting the whole movement जो हमने शुरू किया है सुशांत के लिए। ये मूवमेंट कहाँ जा रही है? कैन यू इमेजिन सुशांत अगर आज जिंदा होता और इस तरह की चीजें देख रहा होता, वो what do you think, what kind of a person Sushant was? He was always for people, he was always with people. And guys, please, I am really appalled के लोग इस ट्वीट को किसी ने लाइक तक भी किया था। I swear to God, ये मेरा होता तो आई थिंक आई माइट हैव बीन इन अ टोटली डिफरेंट सेट ऑफ माइंडसेट राइट नाउ। प्लीज गो हेड एंड ट्रोल। मैं वही कह रहा हूँ, सैफरन को जितना ट्रोल करना चाहते हैं, इफ यू डोंट लाइक हिम, प्लीज गो हेड, डू इट यार। why are you freaking doing certain things like girl child in future के लिए murder? Do you even know how old his kid is? Do you even understand? प्लीज थोड़ा सा सोशल मीडिया पे प्लीज ट्राई टू मेंटेन सम काइंड ऑफ कोई एथिक्स, कोई वैल्यूज, कोई मॉरल वैल्यूज होती हैं। what kind of an upbringing? I am completely understand this ID might be completely fake, might just have been created, uh you know and I am really shocked, and I would love, people asking about Vibhor. Let me answer that question also. Even though I really didn't want to have a session around that, I really don't care about anything right now because I'm really in a different set of mind right now. I really want to. I hope and I wish this person apologizes publicly. Even though I put in a comment, and I'll actually show you. Look at the audacity of this person. Uh, I don't know how to show you guys. So I think, one of the ones who quoted this tweet. So I should be there. Yeah. So imagine. So when I'm asking her, shame on you, what a horrific comment. Let me make it full screen. Imagine what she has to say. There was a message by her. Let me just check if that still is there. And okay. I think this is the one. So let me, oops, sorry. So okay, so looks like the comment is gone. So people are definitely, they've everybody has, I don't know where the other comment has gone. So she did respond back to me, and she said, and still she was like, that it's absolutely fine to have, said something like this. And I was shocked to read that comment as well. Let me see if I can, notification, and I was in the mention, so I should definitely see that. Yeah, I don't know where that message has gone. So this person had the audacity to even respond back to my comment and say, that she still feels she's done the right thing. And I am really shocked to see this such kind of a behavior. But irrespective, guys, how can you wish or say something on social media for a kid who is not even a year old? Forget a year old, for a kid. Guys, please, I really want you to understand one thing. No matter how bad that person is, let me come back on the screen. No matter how bad a person is, no matter how much hate you have for anybody, guys, take this very seriously. Don't involve the family. I've seen this in the past happen to me, and I really did not take it well. I am sure, Saffron being Saffron, he will not take it so lightly. And unfortunately, people are just poking everywhere, everyone right now, and they're trying to disrupt. ये जो एक मूवमेंट चल रही है सुशांत के लिए इस टाइम पे, बिना किसी मतलब के, बिना किसी टॉपिक के इसको खराब किया जा रहा है। एंड मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों किया जा रहा है। जहां तक रही बात, आप जो कोई लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं फॉर विभोर, विभोर ने जो भी किया, जो भी कहा,
There are people who are supporting Vibhor, there are people who don't support Vibhor. You have your own brain, use your own brain and pick the side. Don't have to again get, जैसे विभोर के लिए सब लोग कहते हैं कि उसकी फैमिली को they should take some action. Yes, I think they have taken some action, and I saw that comment from Saffron on his Twitter, where he said that the family has, asked him to be offline and will not be online. So, family जो करेगी करेगी, but उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके पेरेंट्स को या उसके ब्रदर को या उसकी सिस्टर को या उसकी किसी भी फैमिली मेंबर को आप टारगेट करें. Yes, if he's doing something wrong, if he has really screwed up everything, he needs to be blamed, not the family. He needs to be trolled, not the family. Don't say bad things about the family. And I would really encourage, ये लोग जो अभी भी uh, so they have not been deleted since yesterday. Saffron was here. I'm sure he's in a very bad state of mind, guys. Uh, Please don't do all this. Let me actually, I would love to have few people, because there are people who wanted to join this link and talk about this. So for them, I am posting it for you guys. I'm not gonna have this as a long stream, guys. This is the max I can think is maybe 1 hour, not more than that. But please, if you want to join, please come and say, if you don't agree. At the same time, मैं हर platform, every single platform that I will encourage all the platform owners to please take up this issue, this topic. And let me actually stop this. So I would encourage all the platform owners, anybody who's running any sized platform, to please take this up. Speak to your people who are following you, who are listening to you, to encourage them to maintain some kind of decorum on social media. Stop this uh, nonsense that is happening around, taking uh, the family into, or bringing the family into this muck. It is not worth it, guys. End of the day, everybody is here for a cause. हम लोग सब जुड़े हैं. We are united because of Sushant. Yes, there are certain things that certain people do, and again, I'm going to quote that example. I definitely don't like what Akshay Kumar has been doing or has done. Doesn't mean I will defame his family or take against any say against anything his family. So, guys, I'm really in a very bad state of mind looking at such comments. I'm gonna take few people right away so that we can finish the stream quickly. And whosoever wants to say anything, please go ahead. Swati, please. Hi, Varun. Hi, everyone else. I've been following up your channel from a long time. In fact, I spoke to you earlier also, Yeah. and I feel very bad that a lot of YouTubers are going through this right now. I think it's a PR activity that's happening, and but at the same time, it goes like 50-50, because when you know something should not be encouraged, something is really not good to comment because you don't have the facts, and you don't have the facts to prove. Why to say such things? Why to talk something that's like a metaphor? Because everyone's mind is different. You can't control someone's tongue. So same thing, you can't control someone's mind. So in this case, I know the comment that's come on Twitter is wrong, which is really wrong. But then if we go to see, I told earlier also, it's a 50-50 concept. Why do you say such things that people should talk to you like that people should comment on you like that? If it's a very big loss for some family member to die. Imagine, we are just a follower of SSR, we are following up his case, we are impacted. Imagine about his family, what they must be going through, with So that fear of I their kid getting targeted, of yes, the fear that they have, they have small kids in the family. What I'm trying to say is that, Varun, probably it's not the right word or the right sentence I might use. If I'm wrong, anyone can correct me, between the windows. There are some people who should not talk in the air. so If you Swati, talk in let me the let air, me let me interject. Let me interject for a second, okay? I yeah, completely understand from where you are coming, okay, and what your point yeah, is. Completely hmm, understand. At the same time, bringing a kid into this situation,
is something which I'm saying. If you say, did I agree with what happened yesterday on the session, on the live session? No, probably not. Yes, Hmm. it was really bad. Saying that, and whether somebody's alive or dead or whatever, and making whatever comments that was made. Irrespective of that, you, me, anybody else, we are responsible for watching and giving all the views and everybody and that importance to that person. Okay, so we can first blame ourselves. I'll take some ownership, right? I have been blamed myself, and I take that ownership for myself. That when we started off, there were certain things I was really proud of how things were going. I was really proud of how Varun, cleanup was you know, happening. I'm But very sorry. I'm let me very tell you, sorry to I'm very sorry to interrupt you. I'm really sorry. But okay. Varun, I told you earlier also that I can prove it to you through the YouTube videos where one particular person has contradicted five things in one sentences. I agree. That's what I'm. So I think we're talking the same thing, Swati. But the point I'm trying to make is, no matter what has happened, there have been narratives given. There have been stuff, which literal sense may, BS has been thrown on live videos. I completely agree. What I'm trying to say is, you can troll, you can unfollow, you can do whatever to that person. Nobody is stopping you. I have myself done that. Yeah, come on. I was See, I'll tell you what, right, I'll tell you but in between, I had stopped following you. But then when I saw that, you have come on track back, that's the reason I came back on your on videos. your And videos. I And know, I know, you can come to you know can from the come. body language of someone. When someone says something utterly nonsense and the other person is like, okay, I understand what you're saying, but I can't tell you that you're talking nonsense. So I've seen that improvement in you. I've seen that. And I totally understand. In fact, you'll not believe. I really feel bad sometimes for you people because you get some people on your show and you know they are going to talk nonsense, but you can't do anything about it because you are running you are showing that you are with the audience. So, I will not take much time. I would yeah. just say that, you guys talk offline. I'm sure about it. You should tell that everyone is not sitting over here to connect the dots. No one has that much of time. We have lot of things in life to do. We have our own family to run. We have got our social responsibility, our office responsibility, our own business. Who has the time? If you have so much guts to open the YouTube channel, it's a message for others, okay? If I'm wrong, anyone can connect me. I'm open to feedback. If you have the guts, you should say the person's name and not take someone's name, but because of that name, you got into trouble. First of all, you are watching the channel and you're blaming the person that usko dekh ke main influence hua. Then you are saying that connect the dots. I don't have time to connect the dots. There are a lot of dots in everyone's life to connect. Okay. Second thing, Varun, you are doing a good job, which is very nice. Okay. You don't take money on your channel, which is very good again. 100 rupees, 200 rupees, 400 rupees. You don't take anything. You have put your family in risk. I'm sure when I come on live chats, my husband tells me, why do you go? Why are you defaming yourself? I said, मुंह है तो बोलेंगे यार. कहीं तो बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे. So I can understand you must be having some backlash at home also, which you can't tell us on YouTube. Everyone must be having over here. But one more thing, Vibhor, please get sensible people on your show. Otherwise, you will be in trouble. None of us are going to come over there physically to help you because we are sitting far away in different part of the world. So please take care of your family. And if Tiger has got that comment, it's high time. It's a lesson, or you can say it's an alarm for him to realize what he is doing. I'm sure it's just a hoax, but things will get better. But get the right people on your show. I'm telling you, if I'm wrong, I'm telling again, please correct me. I'm very open to feedbacks. So, But please Varun, I take want to. care. This is a very sensitive right thing right now. And you Yeah. guys are the face of your channel, not even us. We are just coming once in a month or once in a week to talk. Your show was going good, but a lot of false narratives had gone from your show, Yep. which has spoiled your name. And plus, the person has the audacity to come on your show, talk nonsense, connect the dots, and then put you in a dot himself and go away. Wow.
Yep. Just take care, Varun. I have no offense, Sure, sure, no sure, sure. problem with you. I really love you No, guys, everyone. yeah. But No, thanks for please that. take But care. It's a humble again, request. I like I said, right, you have all the liberty to agree or disagree with anyone, right? No matter what Yeah, platform, who that person is, and all that stuff. That is not the point right now. The point is, yes, what you said, I completely agree. That yes, people should not have done certain things. At the same time, there were certain things which I still really appreciate that were done on my platform, and I will not yeah. take that away from that. But end of the day, uh, no matter how bad that person is, hum log, I don't know how much you are doing right now, again, no offense to anybody, but not, I don't know how much effort everyone is putting in on their own side, right, to boycott Bollywood, to do whatever against Bollywood people, to support the cause for Sushant. Irrespective of that, there is no reason for us to hate kids or put kids in this kind of a situation, is what I'm I saying. agree with that. What they That have is my said is only wrong. point. What they said is Exactly. wrong. So if you don't like somebody like Vibhor, you don't like Varun, you don't like Saffron, you don't like, maybe Vish, you don't like Shilpa, Yukti, anybody, you have the choice. You don't have to like everyone, right? At the same Yeah. time, you cannot target my kid, Vish's kid, your family member, Shilpa's family, anybody's family member. You cannot target the people of who have nothing to do with this. Imagine, all I'm trying to say is, and I'm picking on Saffron right now because this has happened to me. It has happened to Saffron in the past also. It has happened to many other people, wherein small kids who have no freaking idea what their parent, what their dad or mom are doing in this. Like, I close my door and I sit here, do whatever I need to do for 3 hours, 4 hours, whatever number. My kid don't have a clue what dad is doing, right? Now, why are you kind of putting such kind of comments that what if a murder happens for your kid? Are you out of your freaking mind? What are you even saying? If you want to say something, say directly to Saffron. Don't involve families and kids. Yeah, come on. Last time also, what happened? I've got some threats, and those were verbal threats. Saffron has got threats, but kids, that is stooping to such a dirty level. See, I'm telling you again, we can't stop, we can't talk, we can't control someone's tongue. Okay, there's nothing. It's just to make you scared. I'm telling you, वो खाली डराते हैं लोगों को कि हम ये तुम्हें कर देंगे ताकि आप छोड़ दो. ओके, बट ये एक लेसन होता है, हम सबके लिए होता है, हमारे लाइफ में हमने कहीं ना कहीं सबने जरूर भुगता होगा कि तुम करोगे तो देखो तुम्हारे फैमिली पे इफेक्ट होगा. बट होता नहीं है, भगवान की दुआ से नहीं होता है. मैं But सिर्फ आपसे यही कह रही हूँ sure, कि sure, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन. ये yeah, सब पहले क्यों नहीं हुआ? और एक और चीज, बंदा कह रहा है कि इसके बाद मैं लाइव चैट पे नहीं आऊंगा. अब थोड़ी सी भी ईमान नरम होगी ना, हल्की फुल्की सी भी बॉडी में और अपने मन में और आत्मा में, तो लाइव चैट पे मत आना भाई. लाइव चैट पे तो मत ही आना, क्योंकि आप तो कनेक्ट द डॉट्स करके छोड़ दो कि बाकी सब मर जाते हैं. आपसे रिक्वेस्ट है वरुण, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आई एम डैम श्योर किसी की फैमिली को कुछ नहीं होगा. ये एक डराने के लिए मैसेज था. हमें सिर्फ हिम्मत नहीं हारनी है. सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है, जिसे बुलाएं ढंग का बुलाएं, और जो बातें डायरेक्टली कर सकता है उसे बुलाएं. कनेक्ट द डॉट्स किसी के पास टाइम नहीं है. आप सब यहाँ पर पूछ लीजिए. अगर मैं गलत कह रही हूँ तो प्लीज मुझे कोई करेक्ट कर ले. मैं sure. ज्यादा किसी का टाइम नहीं लूंगी, और भी लोग बैक स्टेज पे होंगे. Yes, मैं yes, अभी रख देती हूँ. But sure. please, all the best and take care and God bless. Nothing will happen. Not Thank you. even to Saffron. Thanks. Okay? Thanks. All right. Bye everyone. Take care. Bye. Yes. Bye. Which you were saying something. Please go ahead. Yes. So basically, what the message that you showed is kind of an offensive one, and I think it came out of an aggression. But key thing, as I told you, that I observed thing. मेरा तो अभी अकाउंट रहा नहीं है ट्विटर पे, पर जो अकाउंट्स होते हैं मैंने काफी, एवरी टाइम आई हैव रिपोर्टेड इट टू ट्विटर, जो भी नंबर्स लगे हुए होते हैं ना, नाम तो हो जाते हैं सलमान खान या शाहरुख खान, फिर SSR फैन. जब आपको उसकी आईडी देखोगे, जैसे मेरी आईडी थी, मेरा आईडी इट जेन्युइनली इट वाज क्रिएटेड बाय माय सेल्फ. जो रैंडमली जो जनरेट करता है ना आईडीज, जो एक टूल आता है आई डू नॉट हैव एक्सेस टू, तो वो नंबर रैंडमली जनरेट करता है. जैसे कोई है मिनाज M234578 9, एक रैंडम नंबर होता है, तो वो दैट इज काइंड ऑफ अ पेड अकाउंट. और फेक अकाउंट कोई भी यूज कर सकता है, जेनेरिक अकाउंट जिसे बोलते हैं उसे.
तो वो एक चीज है, ठीक है। सबको जिसको अगर पता नहीं हो उसको मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन। और जो मैसेज था दैट वाज ऑफेंसिव। अगर इंसान भी ले ले, कोई इंसान है, रियल इंसान है विद दैट आईडी, so it could be out of due to aggression, but at the same time I have done it myself out of aggression. I have posted certain stuff on Twitter but not on public domain. I have personally messaged them. वरुण का भी बहुत सारे होंगे, वरुण को भी मैंने गाली दी हुई है पहले उसके ट्वीट पे जब भी होता है, तो आई हैव I swore at him. I have said all the bad words, but on his personal direct message में करो, उतना होना चाहिए। Correct. वो थोड़ी सेंस होनी चाहिए सबको। और ये एक could be as an indirect threat when you use, so अगर आप लोग में से कोई भी अगर रिपोर्ट करते हो तो it should be instantly disbanded from Twitter, चाहे वो टेम्पररी बैन हो या परमानेंट बैन हो। यू हैव टू, बिकॉज इट्स अ थ्रेट टू एन इमीडिएट फैमिली। उसका एक ऑप्शन आता है, व्हाई डू यू वांट टू रिपोर्ट, हाउ डू यू वांट टू रिपोर्ट, सो जस्ट डू दैट। मैं तो हूं नहीं अभी ट्विटर पे, सो माय आईडी सस्पेंडेड फॉर अ वेरी स्टूपिड रीजन। मैंने किसी को बोला था कि हाँ अगर ऐसा होता है, गिल्टी फाउंड होता है, तो उसको पब्लिकली हैंग करना चाहिए, और वो था कोई मिनिस्टर। तो जैसे ही गया तो मेरा मैसेज कर दिया, मैंने बोला कि भाई आई एम सॉरी, मैं पब्लिकली ले लेता हूँ, पर एनीवे। So that is the thing. And with regards to yesterday's video, I totally agree with the lady which was on the show, Swati, I think her name. Yep. And Varun, to be honest, it is your also moral responsibility as a YouTuber. I know you hate this word YouTuber, but you are on YouTube, so I will call you a YouTuber. You run a show or channel on a YouTube, so you are a YouTuber, despite of the fact that you are not here to make money, unlike others. But I will just address it as a YouTuber. So, Sare, like for YouTubers, when you are running a show, when you are connecting with people, so एक moral responsibility हो जाता है। Then you cannot just shy away saying, if you don't like me, I can say anything. Until some YouTube guy comes and bans me, I can say that Gandhi ji is still alive. See, he just had a peg with me. He is still in hundreds of years. He is still alive. अश्वत्थामा भी है मेरे साथ बैठा हुआ है, पर वो कभी सामने नहीं आएगा। So if you trying to connect people, तो वो अभी भी इंडिया में अभी वो mindset है कि people are genuinely following certain people, certain YouTubers, and then if you drop the bomb, narratives will be changed. Jacob is alive, but he will not come in the light, never ever. Again with that slurry voice, everyone knows what I'm talking about. तो यानी इट इज वेरी हार्ड फॉर पीपल। जैसे आप अगर अभी आप बोलोगे वरुण कि JFK इज अलाइव, तो मैं आपको शो पे ही गाली दूंगा इन अ वे, बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू यू, राइट? इट इज नॉट दैट ओ ये तो मैं चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होता ना। whatever, when you are connected with people, so it is a moral responsibility of that person. If I run my show, I have that thing. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारे मेरे को देखते सारे बेवकूफी है, जो बोलो मर्जी वो समझ लेंगे। सारे लोग इमोशनल है, इडियट्स है, इमोशनली एकदम वीक है, तो सबको इमोशनली करूंगा कि आई वांटेड टू कमिट सुसाइड, मैं सोच रहा था सुसाइड के बारे में, फिर मैं वापस निकल आया, किसी ने मेरे पे मारा, पर पता नहीं क्या कैसे मारा, मैं तो देखा तो मैं नीचे पड़ा हुआ था। All those, trying to get a sympathy gainer, जो कहते हैं वो, Anyway, but then you cannot do that. Wish. I mean, I respect what you're saying, but at the same time, this is definitely not going to be around the other topic. हम उसके बारे में obviously we can talk, It continue. is connected, right? It is connected. But I agree. There are certain things that have happened in the last 24 hours. Like I said, ऐसी Yeah. चीजें, ऐसी बातें हुई हैं जो again, I जिसने करी हैं, it's his moral responsibility to even confirm what he mentioned, right? End of the day, उसके पीछे अगर कोई ये बेसिकली आप इसको मैं एक बड़ा स्टूपिड सी एनालॉजी दूंगा इस टाइम पे, कि धोनी ने इंडिया क्रिकेट टीम को कोई गेम वर्ल्ड कप हरा दिया, राइट? आई मीन, और धोनी को हम ब्लेम कर रहे हैं, बट उसको सपोर्ट करने के लिए अगर सचिन तेंदुलकर ने एक मैसेज कर दिया, तो तुम सचिन तेंदुलकर को बेसिकली तुम उसको फैमिली को धमकियां देने लग जाओ। I mean, yes, at the same time, बड़ी absurd सी analogy है ये, but at the same time, what I'm trying to say is, yes, Saffron is doing whatever he thinks is right, right? You can continue to bombard him, यार। आपने बिल्कुल सही कहा, DM में जाओ, जो मर्जी बोलो यार, गाल आप
मैं बता नहीं सकता मुझे कैसे कैसे लोगों ने कैसे कैसे गालियां डीएम में पब्लिकली हर जगह दी है, पर मुझे दी है यार, मुझे दो, अगर मैंने कुछ किया है। यार मर्डर ऑफ योर फैमिली एंड योर किड, क्या बात कर रहे हो यार, थोड़ा तो मतलब पब्लिक में लॉजिक I लगाओ। told you right, it is wrong. I told you public it is wrong. एग्जैक्टली, तो बस यही पॉइंट था, Exactly, एंड आई exactly. आई So आई that नो is again the व्हाट यू आर what टॉकिंग। what एक एक चीज मैं और यहाँ पर जरूर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। सो गाइज, इस टाइम पे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई डोंट हैव अ रियल अपडेट अराउंड गणेश। लास्ट अपडेट मुझे सिर्फ यही मिला था, और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ है। आई ट्राइड कॉलिंग हिम, बट आई एम नॉट एबल टू गो गेट थ्रू that he was arrested. I have no kind of clue as to why he has been arrested. पहली बात तो ये है। arrest नहीं हुआ, I am sure there is something arrest behind नहीं that. हुआ। Sorry, what? अरेस्ट वो मेरे Oh, हिसाब से he's नहीं not हुआ। been arrested? उसकी वीडियो मैंने देखी, उसकी वीडियो देखी जो उसने लाइव पोस्ट की थी। उसके अंदर पुलिस हाँ कहते जी। कि अरे भाई कहाँ हम कर रहे हैं, तो वो म्यूट कर देता था। फिर कहता था कि मेरे को मोबाइल मना कर रहा है, तो वो पुलिस वाला पीछे से बोल रहा है, तो उसने एडिट भी नहीं किया। वो पुलिस वाला बोल रहा है अरे भाई यू कैन यूज योर फोन, आप फोन यूज कर सकते हो। तो फिर वो म्यूट कर देता था। इफ यू सी द वीडियो, तो तभी मैं कह रहा हूँ। तो I Okay. personally told you, Varun, so you may हाँ। support him. I do not believe him No, 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 100%. no. Again, let me clarify. Let me clarify again. Support की बात यहाँ नहीं आई गणेश की, right? He's someone who is down on the streets, doing whatever he is doing. Of Yes. course, there could be things that he is not doing right, but at the same time, end of the day, अभी जैसे सैफरन का, right? I mean, सैफरन के लिए किसी ने बोला, I'm here. विभोर के टाइम पे भी, we were asked not to say anything. That's why we were not saying anything. अदरवाइज शायद विभोर के टाइम पे भी हम उसी तरह से बात करते, अगर उनके डैड ने मना ना किया होता। एंड राइट नाउ अगर गणेश का भी कुछ हो रहा है, चाहे वो अंकित का हो, सबका कुछ ना कुछ यहाँ पर बैकग्राउंड में क्या है क्या नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट, नो बडी नोज। आप मुझे उतना अच्छे से नहीं जानते, Exactly. मैं आपको नहीं जानता। हम लोगों के अपने पर्सनल एजेंडास क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। तो बेस्ड ऑन दैट, अगर ऐसा चले लगा तो हम तो किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम सिर्फ अपने लेवल पे फाइट करेंगे तो ये मूवमेंट कहीं नहीं जाएगी। सो वी हैव टू बी टुगेदर विद सर्टेन पीपल। रवि तिवारी कब से किस तरह की चीजें वो कर रहे हैं ऑन रोड, सीबीआई के सामने, और बहुत सारी चीजें, राइट। वी रियली वांट टू सपोर्ट, बट उनको भी कितना ट्रोल करते हैं लोग उनको। सो इररिस्पेक्टिव, इंडिविजुअल लेवल पे ये डिबेट Exactly. नहीं चलेगी। ये मैं So बता what I'm saying, what I was saying is, मैंने बोला मैं ट्रस्ट नहीं करता, पर I have always said कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, I do not ignore that either. तो या अगर वो एसएसआर के बारे में या जो भी अपना जो मुहिम है वगैरह है, करेक्ट, उसके अंदर वो कर रहे हैं, तो इट इज गुड थिंग। श्योर, चाहे उसका पर्सनल एजेंडा हो कुछ हो, पर ऑलराइट, ये ऐसे ऐसे वो जो होता है कि मेरे को किडनैप कर दिया, फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो मेरा दोस्त था, और फिर ये सब, यानी तो दैट इज that I sort of just आई एम गोना it's टेक my personal view. You guys, sorry, you can श्योर, hate me for that. श्योर, श्योर, It's my श्योर, नो नो personal नो, view. आई एम गोना टेक फ्यू मोर पीपल। Chalo, हाँ, थैंक यू सो I'll मच। go. I'll go. Thank शिल्पा, you. We'll talk शिल्पा later. जी, प्लीज गो अहेड। Sir, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Sir, actually, I'm sorry, I'm not aware of what happened yesterday on your show. But yes, I am again. I feel sorry for whatever tweet that Saffron has got. But they've been making it a joke, like the whole movement. Saffron and Vibor, they've been trying to, I mean, spin that story of those whatever names that they've created for people. And it's definitely they're just making the whole movement a joke, which I also don't agree with. And yes, when sir, actually the celebrities, when they are targeted on social media, it doesn't affect them that much, because they obviously have PR people looking after their accounts. But when normal people like you and I are targeted, we definitely get hurt. But the thing is that there's a level of seriousness that you have to maintain when you're doing something for I mean, there are so many people who are in this movement together. So don't I don't like the way that they've या या I don't know what to say, they've करेक्ट। just ruined the आई whole movement. So
And I really don't like the fact that, there's what do you say, they're making riddles and they're trying to make people guess whatever it is. They I mean, as Swati said, there's no time, nobody has that time for such silly things. And I've never been a follower of Vibor, and there's seriously, when he targeted Sushant's family, it was such a bad thing to do. We really don't know what they're going through, because they've never made a public statement. So, and also last week when you spoke about Salman's fake fans on Twitter, this could be one of those, fake profiles which nobody owns up to, and No, no. they So let might me have tweeted clarify. something Okay, like I'm gonna this. put you on mute for a second because there is an echo. Okay, so let me actually, again, for people who are also asking if you could kind of recap. So let me actually just show you. This is not a fake account of sorts, because I'll show you why I say this is not a fake account. It is because this person responded back. Unfortunately, I'm not able to find the other tweet, but right now Saffron has somehow deleted his account for now. I don't know what the I mean, we all understand what has happened. But this person, whosoever this Mehnaz, if we call it a fake account, right, this person wrote all this nonsense. After that, when I responded to her, she responded back. I'm gonna say she because it's Mehnaz. So let me actually try one more time, because I did. Oh, I should actually click on retweet it thing. Give me 1 second. No, because I quoted it, so I should be there in that list. Yeah. So I said, "Shame on you, lady," with blah blah blah, and then she responded back to me, and I am really looking for that response. So she did respond back, and she's actually been responding back to certain people as well. And that's why is making me feel that this person is not fake. This person just created the account to create this nonsense. And I agree with what Vishud was sorry, Swati was saying. Maybe this was just created to give threat, and that was the whole idea. कि threat देने के लिए इन्होंने एक अपना आईडी बनाया, and that's pretty much it. But yeah, somehow I am not able to see the other response which she gave me, and maybe she has deleted it. Okay, no. So if you see this, so she responded back. She said, "No way," because I asked her that you should publicly apologize. So what she's saying is, "No way, no mercy for people like Saffron who play filthy on social media platforms. He should learn blah blah blah." You see all this nonsense, and imagine uh, she's saying, "You too, Varun. Just keep yourself in the position of the father." And see, she's still responding. 1 hour ago, God is watching such a horrific live show of yesterday. Again, this is not a live show that happened on my platform. This was their own channel where this happened. But look at this. She's still responding. And I'm very surprised that at this point of time, even her account is still not kind of blocked because of putting such kind of a message. So all I'm trying to say is, this definitely is someone who is just here to create, some kind of noise, and that's pretty much it, nothing else. So this is definitely not a fake account. Somebody just created it. Looking at the date, it says December 2020, and I'm just gonna assume it was just created yesterday or day before. So shame on these people that you can troll. Nobody is asking you not to troll people. You don't like somebody. I have trolled all the biggest superstars. I have trolled all the leaders. On a lighter note, I've just been. I mean, not just about a couple of months back, I've been blocked by Swamiji because I asked him a very simple question and he blocked me. That is absolutely fine. But should I be asking questions to Akshay Kumar about his son? Should I be asking Shah Rukh Khan's son a question about his dad? What kind of a world are we in? Why? And that too, what you're saying is, what happens if murder happens to your daughter? Are you out of your sane mind? कुछ भी करो यार, कुछ भी बोलो, गाली दे दो यार, कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे, करो यार, nobody is stopping you. But are you serious talking about a kid who is not even a year old? थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है लोगों को.
ठीक है, उन्होंने कुछ किया होगा, सब गलत किया होगा, आपको नहीं पसंद आया, इट्स परफेक्टली फाइन. You can hate anyone you want to hate. Don't get this kids thing. Anyways, I mean, I can keep on and on and on this. I really want everybody to kind of understand this. And yes, sorry, you want to say something? Sir, the thing is that celebrities, children, they're also targeted equally. But it's like, what I'm trying to say is that everybody is not as polite or as educated as, we would expect them to be. Definitely targeting someone's child just because, you don't like that person, it's a horrible thing to do. I mean, I have a pet, and if someone scolds my pet just because, they don't like me, definitely I'm not going to agree with that person. But social media is a place where, things like this happen. And especially to people, I mean, whom we think, we can target easily. So that is one thing, sir. Definitely, I feel sorry for Saffron, but yeah, as you, I mean, I know that you're trying to put this message out that be what do you say? I mean, Be a mind little your bit more language when mindful and you, civil around it. yes, mindful about the other person. So I would agree with you on that, but definitely they, Saffron and others should not be using social media to, you know, create this kind of ruckus. That's it, Absolutely. sir. I Thank you. agree to that. Thank you so Yes. much. All Thank right. you, Lord. All right. Yukti, please go ahead. So, guys, I'm gonna stop the StreamYard link so that we can end this at the 1 hour mark. Yukti, Hi, Varun. Hi, everyone else. hello. I just wanted to say one thing. It's okay to disagree with, each other or what other people are saying, but it's not okay to say crap about, family, Yep. especially kids that have nothing to do with this. And yeah, it just made me really upset just reading that. And, it's just because you're behind a screen, that doesn't mean that you can say whatever you like. True. You wouldn't say that to somebody on their face, or you would think like 100 times before saying that to a stranger. So it's just kind of sad to see why people think it's okay to, say that to somebody on social media, and it's not okay. It is. It is not. And I just want to make a comment. There are people who are putting up some comments that Varun, no need to support. Again, guys, just to be clear, I am not here supporting any kind of narrative or any kind of thing that has been done in the last 24 hours. I am not supporting or endorsing any of that. What I'm trying to do is, somebody has said something bad about a family member, a small kid, and wishing something very bad. All I'm trying to say is, people should understand that, and that's pretty much it. Nothing more, nothing less. So please don't. Yes, I agree with what Rimi Gahotra. Please mass report karo. Yes, karo. Even if you don't like what Vibhor has done yesterday, that's fine. You can go and bombard Vibhor. That's him. If you don't like Saffron, go bombard him. Don't bring family, don't bring kids to this nonsense. Because they have no clue what's happening. But you wishing bad shows your own character. And also इससे सिर्फ एक चीज होती है, and I'll be very honest, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी ट्रोलिंग होती है, मेरी भी होती है. I have developed a hard skin, so I really don't get bothered. But then the family doesn't have that same kind of hard skin. Sometimes my parents, sometimes my wife, sometimes my friends, they also look at it and they also say a few things. And just today morning only, I got a call, and from my family, and they were like trying to get me off this social media thing. They want me to stop. I'll be very honest right now. They really want me to stop doing what I'm doing because of all the muck that gets thrown at me as well. End of the day, जैसे I think स्वाति ने ही बोला था, मुंह है तो बोलेंगे तो सही, and question है तो पूछेंगे ही सही. So I've started something. I will try to continue it for as long as I can. Till the time my family and all that. जब मेरे साथ हुआ था last time when Vibhor did something, he mentioned something, we had to part ways, and we did part ways very gracefully, and he acknowledged that that puts me at risk. End of the day, till the time my family is not at risk, yes, I will continue to raise voice.
I will let everyone raise their voice on this platform, and that's what this platform is all about. But end of the day, if you continue to throw stuff at me, I can still take it. But if something gets thrown at family, then there are certain actions, of course, that everybody takes, and I'm sure Saffron will take certain actions. And that's why I think one of the things that he's immediately done is get off the social media, because anybody can lose their mind, no doubt about it. And तो प्लीज मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है यार, आप जिसको ट्रोल करना है, आई थिंक सैफरन हैज अ स्ट्रॉन्गर स्किन देन मी, so he can take all the nonsense that anybody wants to throw at him. And for all the heat that he's been getting, I think he's been handling it very gracefully, and I'm not here speaking on his behalf. I don't even have any rights to speak on his behalf. But आज की डेट में सैफरन की जगह कोई और भी होता, I think the same situation would have been, and the same life would have happened. I would have said the same things for anybody, and anybody who I have known. We've taken up issues, causes where I have not even known people. I've interviewed people who have no credibility, but at the same time, I've still interviewed them just because people wanted to have them on the platform. So at the same time, doesn't really matter who that person is. Don't involve the family is what I am trying to say. So sorry, you think anything else you want to say? Yeah, no, and I just want to thank you for, doing this live and acknowledging Sure. that. You might not agree with certain things, right? That's okay. It's their opinion. But like I said, a threat is a threat, Yes. even if it's on social media. Yep. So that's all I wanted to say. And thank you. Sure. Thanks, Shakti. All right, Vijendra, you're mute. Hi. Hi. Good morning, Varun. How are you? Very good. Not very good, but yeah, I'm good. Yeah. You're correct. Nobody is in good status now Yes. because ये जो सब कुछ हो रहा है ना, Mhm. the way they are barking, just like street dogs, they have not got to that level. They have all got to that level now because there is no content. They Yeah. don't have anything, and well, I don't know how they can waste their time talking so much bullshit. What they are gaining and what's happening we can't understand. At the end of the day, CBI will say something within 2 3 weeks because they're waiting for the second case, which is being done very very technically and smartly by Ria on SSR family, especially the sisters. That has to be squashed. Otherwise, CBI has obligation. I think you might have heard about this from Vivekananda ji. Technically, it's a very good move because this is going to delay the case. It's not going to do anything to the case. To delay the case because CBI has to basically uh, give a verdict on both the cases. What finding they found for the other FIR and for the one FIR which is being done in Bihar. But at the end of the day, yesterday I was watching this Saffron. I don't know what culture he has got, from where he got all these ideas to talk whatever he wants in front of people who are really has some love to SSR, including you and me. Maybe we are in a different lines. You are hardcore, I'm a softcore. Because I don't see just SSR in this moment. I see beyond SSR because there is a big nexus. I want that to come out. SSR will never come back. We can only give a what do you call mukti to him, saying that these people are now under bar, so that whatever happened to him was very sad, and we accept it, and we still consider this moment became heated just because of SSR. I don't know how much you agree about it. See, end of the day, again, Vijay, one thing which I have to say is, everybody have their own opinion. You have your own opinion. I have my own opinion. Yeah, People on the screen, Animesh, anybody, they have their own opinions as well. And like I said, you can agree, you can disagree. Personal judgment, right? End yeah, of the day, there were certain things that have been done which were not right, and which I think nobody can deny. Then there were certain things which I've very openly said. I've been very proud that at least through my platform I was able to get Vibhor and get certain things out about this dirty Bollywood, and I've been very proud of that, and I've been very happy that I was even part of that. Yes, after that there were certain things that really did not go well,
and that is the reason why we parted ways. So this session again, like, is not about Vibhor or any of his narratives. It's not about that. The point is, irrespective of whatever these people have done, right? I mean, again, I'm going to repeat the same thing. We can shame Amitabh Bachchan as much as we want to, but shaming his granddaughter, or maybe shaming his daughter, maybe, is not justified, right? Or giving a kind of a death threat in a way, or direct or indirect, is really very shameful. It's very inhuman, is what I'm trying to get to. You can troll Amitabh Bachchan as much as you want. You can troll Akshay Kumar as much as you want. You can troll any businessman you want to. I was at Dubai Tamilian show. I mentioned this example. यहाँ तो इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नहीं किसी ने ट्रोल करने से छोड़ा, राइट? तो बाकी लोग तो क्या है, तो उनको करो यार, जिसको करना है. यू don't have to like everyone, but at the same time, getting these kids and wishing like stupid things like murder and all that nonsense, and not wishing, but even saying, putting those two words together with a kid is not justified. That's the only point I'm trying to say. Social media पे थोड़ी सी यार, there has to be, वो कहते हैं ना, एक तमीज होती है, वो तो रखो. You can hate people. Hate is a very strong word. You can hate people. You can hate me यार. You can troll me. आप अब मेरे ऊपर तो वीडियोस तक भी बने हैं, राइट? हमारे कई लोग हैं जिनके ऊपर वीडियोस तक बन गए हैं. उसका मतलब ये थोड़ी ना. और yes, my way of dealing things are different than Saffron's, than Vibhor's, than yours, than anybody. But लोग कहते हैं इन लोगों को ब्लॉक कर देना चाहिए. मैं नहीं ब्लॉक करता यार. तो क्या हुआ? विश्व जी अभी हमारे साथ स्क्रीन पे थे, राइट? उन्होंने जब वो आए थे, उन्होंने मुझे खुद बोला कि गालियां तक दी है, राइट? एंड ही वाज नॉट अ बिग फैन. A lot of people do still do it, but still they are, I think even Animesh I saw, he also was not a big supporter. Vaibhav Tiwari, the way he started off was, he also bashed me. So there are people who bash you. It's perfectly fine. Nobody has to love me. Every single thing that I do, everybody has to love me. No, nobody is saying that. But if Vaibhav Tiwari ने अगर, या आपने, या किसी ने भी मेरे बीवी या बच्चों या मेरी फैमिली के बारे में कहा होता है, I would not have taken it lightly, is what I'm trying to say. So that is the only point. No, no, I agree with you, Varun. But Huh. sometimes you know what happens. Yeah. You see, your case and my case is different because we are not involved in anything. When there is a big history of things happening, karma will always come into picture. It doesn't mean that Amitabh Bachchan kuch kiya, so karma is not only for him. Yeah. See, this is our Hindu belief. This is beyond you, me talking many things here. But there is no need for us to talk about it from our mouth when the karma is actually going to hit us as well. Yeah. What, तो ठीक है ना, it is कर्मा not, पे रहने देते हैं ना सर. वही तो मैं कह रहा हूँ कि कर्मा पे रहने दो. yeah, और that's why I अपने, don't talk. I don't like talking about हाँ, और offsprings of सोशल मीडिया को रहने देते हैं यार, उन लोगों को ट्रोल करने के लिए जिन लोगों ने सुशांत के लिए एक आवाज तक नहीं करी. वो लोगों ने जिन्होंने जिया के डेथ के बाद अपने आप को ये प्रूव किया, या उसके जिया को भी प्रूव करने की कोशिश की कि शी वाज लाइक इन डिप्रेशन. ऐसे लोगों को ट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं यार. लेट्स बी क्रिएटिव. हमारे ऊपर मेरे, सैफरन और बहुत सारे लोगों के ऊपर वीडियोस बड़े क्रिएटिव. एक दिन मैं किसी से बात भी कर रहा था मजाक में, यार काश मुझे वो कनेक्ट द डॉट्स वाला ब्यूरो वाला जो है, वो जो एडिटर है वो मिल जाए. क्या क्या कंटेंट बना सकते हैं यार, क्या मजेदार और क्या क्रिएटिव कंटेंट है वो. सुन के और देख के कितना मजा आता है. एंड वी रियली वांट दिस टू हैपन फॉर द कॉज, द मूवमेंट. हमें ऐसे लोग चाहिए इस मूवमेंट के अंदर, जो संजय राउत जैसे, जो सीबीआई को कुत्ता बोलते हैं, उनके लिए वीडियोस और एनिमेशंस बनाए, उनके बारे में करे. यार आपस में ही एक दूसरे के बारे में ऐसे बकवास लिख के और एक दूसरे से लड़के कुछ नहीं मिलने वाला. यस, देयर आर सर्टेन राइट पीपल, सर्टेन रॉन्ग. वो कहाँ नहीं होते यार, हमारे ऑफिस में होते हैं. उसका मतलब क्या है कि अब मैं उसके घर तक पहुंच जाऊं? ऐसा नहीं होता यार. इफ यू डोंट लाइक समवन, डोंट लाइक इट. यू डोंट हैव टू लाइक देम. तो आप डिस्टेंस बनाओ उनसे. बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप शुरू हो जाओ फैमिली तक जाना और बाकी सब चीजें. तो आई मीन दैट वाज द होल पॉइंट. आई नो मुझे भी बहुत हीट मिलेगी इस सेशन के बाद. उनको सबको लगेगा जैसे कि मैं आई एम काइंड ऑफ endorsing somebody, and I'm endorsing. Again, just to be very clear, I'm not endorsing any of the things that have happened. What but I'm not endorsing is, or what I'm endorsing right now is, 100% I'm going to be vocal about this. Please don't involve any family member. If you don't like me, talk to me, hate me, troll me. Don't get into my family and don't get into my personal stuff. That's my only request.
nobody will troll you, Varun. I know. Actually, tell you why. अरे Because you have accepted once that you had a mistake by bringing Vibor and letting him to talk all the BS. हाँ, आप After अभी that, चैट no, में देख लेना after ना that you have moved away from it. You are विजय, not. आप अभी अभी चैट में ही देख लेना, तो बहुत प्यार मिल रहा है चैट में भी, मुझे देख रहा हूँ थोड़े बहुत मैसेजेस। तो ऐसा नहीं है, यू नो देयर आर पीपल हु विल डू इट एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद दैट, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। करो यार, मुझे ट्रोल करो। ये देखो, ये मेरे को अभी मैंने एक स्क्रीन पे जो क्वेश्चन रखा हुआ है, माधुरी जी ने पूछा है, काइंडली आंसर वरुण जी। द सेम काइंड ऑफ थ्रेट वाज गिवन टू स्मिता पारेख चाइल्ड बाय वन ऑफ योर ओल्ड फ्रेंड्स, राइट? तो इसके अंदर मैं फिर वही बोलूंगा, इस एग्जाम्पल में भी मैं सेम ही चीज बोलूंगा। उस टाइम पे जब वो जिसने किया था और जो भी हुआ था, यू नो, उस टाइम पे वी हैड लिटरली काइंड ऑफ, मैं ये कहूंगा कि वी ऑल्सो पार्टेड वेज, बिकॉज एंड ऑफ द डे। और आप बच्चे की बात कर रहे हैं, मेरे प्लेटफॉर्म पे तो यू नो व्हेन वन ऑफ द लेडीज केम इन एंड शी वाज टैग्ड एज समबडी, यू नो, उनके लिए भी मैंने बहुत हीट ली थी, बिकॉज आई शोड अ लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट टू दैट लेडी, irrespective of who she was and whatever she, you know, was tagged as कि वो ISA एजेंट है नहीं है, बट उसके बावजूद भी मैंने हीट ली थी, क्योंकि मैंने थोड़ी सी उनके लिए रिस्पेक्ट, मैंने उन ओल्ड लेडी जो आई थी मेरे यू नो शो पे, जिनसे मैंने सिर्फ उनके क्रेडेंशियल्स मांगे थे, उनके लिए भी मैंने रिस्पेक्ट शो की थी, अभी भी मैं करता हूँ। तो एंड ऑफ द डे रिस्पेक्ट शो करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एंड ऑफ द डे you know it shows your stand, it shows your moral values, it shows you know who you are. गलत हर कोई हो सकता है, ये तो मैं कहता नहीं, कोई भी दूध का धला नहीं होता, प्लस नोबडी इज परफेक्ट, यू नो, मैंने भी गलतियां की होंगी और मैंने भी की हैं, उनको एक्नॉलेज करो एंड मूव ऑन। एंड ऑफ द डे, यू नो, उसकी वजह से अगर मेरे किसी फैमिली मेंबर पे आप क्वेश्चन करो या उनको टैग करो और उनको बुरा भला बोलो, दैट इज समथिंग विच वी शुड नॉट डू इट, एंड दैट्स द ओनली, वो कहते हैं ना, एक मॉरल वैल्यू के हिसाब से आप प्लीज डोंट डू दैट। Yep. ऑल यू कैन डू इज यू कैन टैग दैट पर्सन, और जैसे विश्वत ने बोला, उनके डीएम में जाओ यार और फोड़ दो। मुझे बहुत लोगों ने डीएम में फोड़ा है, और उसके बाद आज की डेट में वो यहाँ बैठे हैं और हमसे बात भी करते हैं। तो प्लीज let's let's kind of focus on that. Yeah, I totally agree with you. ऑलमोस्ट घंटा होने वाला है, तो यस, थैंक यू सो मच। SSR वॉरियर, प्लीज गो अहेड। Okay. SSR Warrior, you were mute. Okay, I'm gonna move to Animesh. Please go ahead. Animesh? हेलो। Yes. वरुण जी नमस्ते। सबको पैनल पे जो भी हैं और जो भी लाइव देख रहे हैं सबको नमस्कार। नमस्ते। ऑब्वियसली बहुत ऐसी ट्वीट्स हो, मैसेजेस हो, चाहे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, किसी को प्राइवेट मैसेजेस में हो, इसका तो बिल्कुल भी कड़ी तरीके से निंदा करनी चाहिए। और जो भी ये करता है शायद मेंटली स्टेबल नहीं रहते हैं ये लोग, और खास करके हमारे देश में ऐसा बहुत होता है। लोगों को एक अच्छे वे में ट्रोल करना नहीं आता है लोगों को, या तो फिर अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप अपना काउंटर सही तरीके से रख नहीं सकते हो, और आप या तो गाली देते हैं या तो फैमिली के बारे में कुछ बोलते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। ऐसे बहुत लोगों को डेथ थ्रेट्स मिला है, लड़कियों को रेप थ्रेट्स मिलती है, और ये बहुत ही गलत वे है जो भी हो रहा है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सैफरन के साथ ये पहले भी हो चुका है, राइट वरुण? मेरे और सैफरन के साथ तो लाइक हाईएस्ट लेवल का भी हो चुका है, यू नो, बट यस, इट हैज हैपेंड। हाँ, तो पहले भी ये हो चुका है उनके साथ। तो जब हम ये बात की भी निंदा करते हैं कि हाँ ऐसी काम नहीं होनी चाहिए, चाहे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, आप प्राइवेट में भी, डीएम में भी किसी को ऐसी बातें नहीं बोल सकते हैं। बहुत ही गंदी, बहुत ही भद्दी बातें हैं ये। और किसी के फैमिली के बारे में, खास करके बच्चे के बारे में, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। चाहे आप एनालॉजी अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो आप कोई बेटर कुछ एक अपना दिमाग में कुछ रख के ये कीजिए। ऐसी घटिया एग्जाम्पल किसी को भी मत दीजिए, चाहे आप उसके साथ डिसएग्री करते हैं, एग्री नहीं करते हैं, लव करते हैं, हेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, दैट डजंट मैटर। लेकिन अपनी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखिए, अपनी स्टैंडर्ड को इतनी मत गिराइए कि आप कोई ऐसे घटिया एग्जाम्पल दे के अपनी अपनी स्टेटस और अपनी लेवल का
प्रेजेंटेशन पूरी दुनिया के सामने कर रही है, क्योंकि ट्विटर पे आपको हजारों लोग देखते हैं। ये बोलने के साथ मैं ये भी बोलूंगा कि सैफरन के साथ ये पहले भी हो चुका है, और कहीं ना कहीं सैफरन को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। ये जो हम बात करते हैं कि यू कैन डिसएग्री और यू कैन, तो आपको भी जब हम बच्चे या फैमिली के बारे में बोलते हैं और कि उनके बारे में ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो जहाँ पे एक मृत आत्मा की बात आती है, आपको उसको भी लेके रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। आप अगर अपनी इज्जत, अपनी फैमिली की इज्जत नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम एक मृत आत्मा जो है, जो हमारे बीच अभी नहीं रहा है, इतनी अच्छी आत्मा थी, उसकी एटलीस्ट शांति के लिए आप लोग उसका तो मजाक मत बने। और ये सब काम करना, ऐसे वीडियोस बनाना, नाम इसका नाम इनडायरेक्टली देके ऐसे ये करना, तो ये आप मतलब आप अपने ऊपर ये सब जो भी ट्रोलिंग को बुलावा दे रहे हैं, तो आपको भी थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम ये पूरा इसको निंदा कर रहे हैं, तो वो काम को भी निंदा करनी चाहिए वरुण जी, ना कि हम लोगों को ऐसा बोलना चाहिए कि यू कैन डिसएग्री और नॉट। हमको अगर किसी बात से प्रॉब्लम होती है जो कि गलत है, तो उसको हमको स्ट्रांगली हमको पॉइंट आउट करके उसके अगेंस्ट रहना चाहिए। वी कैन नॉट सिलेक्टिवली चूज कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या सही नहीं। Yeah. हमारी कंसाइंस जो है वो हर गलत चीज के अगेंस्ट गलत रहनी चाहिए और सही चीज के अगेंस्ट सही रहनी चाहिए। हम अगर अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करेंगे कि मेरे हिसाब से ये तो चलेगा, मैं यहाँ पे चुप रह जाता हूँ, मेरे हिसाब से ये नहीं चलेगा, मैं यहाँ पे बोलता हूँ, वैसा नहीं होता है। जो आपका मोरल और आपकी कॉन्साइंस रहती है, वो हर गलत चीज को गलत ही देखेगी ना। आपके लिए वो सही और मेरे लिए गलत तो नहीं हो जाएगा। Right. तो मैं सिर्फ इस राइट। टाइम पे निमेश, the only point I really want to make again, I let others also speak, but मैं सिर्फ इस टाइम पे एक चीज बोलूंगा, न्यूज चैनल्स का अगर मैं एक बड़ी एनालॉजी दूं आपको, देर आर हर तरह के हमारे न्यूज चैनल्स हैं, देर आर चैनल्स लाइक रिपब्लिक, एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, हर कोई अपना डिफरेंट तरह का एक एजेंडा हर चीज लाता है, राइट। सर वो एजेंडा नाम नाम देके बोलते हैं, वो ऐसे किसी को जो हमारे बीच रहा नहीं, उसका नाम कुछ और जैकब जोसेफ बोल के उनके बारे में स्टोरीज नहीं बनाते हैं न्यूज चैनल। हाँ, कि कोई बीजेपी को सपोर्ट करेगा, कोई उसके अगेंस्ट रहेगा, कोई किसी राइट, को सपोर्ट करेगा, कोई उसके ब्लंट अगेंस्ट रहेगा, करेक्ट। लेकिन ऐसे वो लोग पॉइंट आई एम ट्राइंग टू गेम्स नहीं मेक इज खेलते हैं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आपको जरूरी नहीं है कि सारे न्यूज चैनल आपको इक्वली पसंद हो, ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं पसंद होंगे, तो उनको आप जो ना पसंद करते हैं, एज अ पर्सन हु हैज सम ब्रेन, यू वुड नॉट गो एंड वॉच दैट चैनल, राइट। आप ये नहीं सर करेंगे कि आप वहां जाएंगे और वहां पर आप ये भी सुनाएंगे भी कि भाई सर वी डोंट। देखिए सर देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ जी। अगर ये बात ना देखने ना देखने की बात नहीं है, ये नॉर्मल न्यूज रहती ना, तो मैं बोलता कि हाँ चलो ठीक है, ये मैं देखूं ना देखूं। सर यहाँ पे न्याय और अन्याय की बात होती है। वो जो बात जो बंदा बोल के गया है वो प्लेटफॉर्म पे कल, जिसके रेस्पॉन्स में ये ट्वीट आया है, वो पहले गलत है। हमको पहले उसकी निंदा करनी पड़ेगी। वो ऐसी बात नहीं है कि हाँ ये किलर है कि नहीं है, वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कुछ बोल रहा था, वो लिटरली लोगों की सेंटिमेंट्स का मजाक बना रहा है। तो पहले तो जो गलत है उसको गलत बोलो और फिर जाके इस पे आओ, वरना फिर लोग बोलेंगे ये तो एक ट्वीट है, इसको आप देखो या तो ना देखो, आपके ऊपर है। कोई तो एक आदमी का ट्वीट नहीं था। तो यू कैन नॉट बी नो, दोनों नाव में आप पैर नहीं रख सकते हर जगह पे, श्योर और श्योर। तो सिलेक्टिवली तो बिल्कुल ये भी नहीं ये कर सकते। सिमरन जी भी लिख रही हैं पहली हमारे बात, मैं यूट्यूब वहां पे। पे वो शो पे सर लोग आते हैं, लोग इमोशनली जुड़े हुए हैं, लोग राइट, आके बहुत ही एजेड लोग आके रोते हैं। कल राइट। एक लेडी रो रही थी वहां पे। यू नो व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस आर रनिंग थ्रू पीपल राइट नाउ। लोग कितने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट ये करते हैं, और तुम उनका हंस के मजाक उड़ा के ये सब चीज बोलोगे, तो तुम्हारी इमोशंस का कौन रिस्पेक्ट करेगा। दिस वन ये आई। ऐसा ऐसा चीज नहीं है सर कि वो कल के शो में ऐसा बोल रहा था कि अरे वो मर्डरर हो सकता है, ये मर्डरर हो सकता है, और उस बेसिस पे हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको देखे कि नहीं देखे। लेकिन ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है कि वो जिंदा है, मैं जाके उससे मिलके आया हूँ। अरे तुम क्या, तुम पागल होकर के तुम दुनिया को पागल बनाओगे क्या। ओके, एनीवेज, इसके लिए आई थिंक वी हैव हमारे साथ जुड़े हैं धीरज जी, जो बड़ी देर से शायद कुछ बोलना भी चाहते हैं, तो प्लीज धीरज, मे बी योर कमेंट्स। आज तो सुबह से परेशान हूं मैं। हे वरुण, हाउ आर यू? गुड सर, चल रहा है, आज देख तो लो आप आज तो क्या दिमाग चल की रहा है। तरफ दही हो रहा है कि ये समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब क्यों हुआ। और वैसे पहले मैं कमेंट पे आ जाता हूँ। कमेंट तो बहुत ही गलत था,
लेकिन मैंने वो ट्विटर का अकाउंट भी देखा, मैंने रिप्लाई भी किया है कि लग रहा है कि ट्विटर अकाउंट जैसे भी क्रिएट ही हुआ है एकदम, इट्स अ फ्रेश न्यू अकाउंट Right. एंड इट्स बिन उसके जो भी Yeah. 20-25 ट्वीट्स हैं, इट्स जस्ट ऑल अबाउट बैशिंग एंड सेइंग बैड वर्ड्स टू ऑल द डिफरेंट डिफरेंट पीपल. सो आई थिंक इट्स वो टारगेट के Yeah. लिए एक अकाउंट बनाया गया है. तो बट यूजुअली अगर कोई करना भी चाहता है Correct. ट्रोल, तो इवन वी डू ट्रोल, राइट? इवन आई डू ट्रोल, सो बट आई नेवर टेक द फैमिलीज नेम और somebody else name. So if किसी के साथ फाइट है तो Yeah. डायरेक्टली टॉक टू हिम, एंड देन इफ यू वांट टू यूज बैड, इवन यूज द बैड वर्ड्स, use against him, please don't involve family. It's really going very low, so nobody should Yeah. go that low. Yeah. और दूसरा तो वही आज जो हुआ है उसके कारण तो पूरा दिमाग का एकदम वो हो गया है. तो मेरी समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों, जैसे वो शुरू में जब विवो व्हेन ही स्टार्टेड, so there was a purpose, right? At least he was giving us information, and at least for me it brought me, it connected me, and to the campaign, and it gave me a big picture of what big wrong is going on and how big wrong was done to Sushant, because before that there was no narrative. At least he gave us a narrative, he gave us few pointers who could be involved and why and how badly it was done. तो उसका एक पर्पस लगा. लेकिन जो आज की है इसका मेरे को पर्पस ही समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्यों, इसका क्या मोटिव है. इसका तो लिटरली इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. और ट्रू होने, अगर ट्रू हुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रू होने के चांसेस तो मतलब नेग्लिजिबल है, क्योंकि द वे वी हैव सीन द फोटोज, और वो मोर्चरी वो जब उसका क्रियाक्रम हो रहा था उसके भी कुछ कुछ फोटोज हैं. उसकी सिस्टर्स थी वहां पे, तो वो फोटो भी राउंड अप है, अनलेस कि वो फोटो रॉन्ग हो, तो वो फोटोज भी हैं हमारे पास. तो अगर कोई आके अभी कहता है कि वो है, तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल लग रहा है. तो कोई वो है ही नहीं. तो मुझे ये रीजन समझ नहीं आ रहा है कि क्यों. तो वही आज सुबह से बहुत भड़ास थी, किससे बात करूं समझ नहीं आ रहा था. अच्छा हुआ आप धीरज जी, लाइव आए तो मैं कुछ तो बोल पा रहा हूँ. मैं कुछ दोस्तों से भी बात किया, मैं वो भी सब बोले क्या पागल हो गया है, क्या अब ऐसे कैसे बात आप कर फोन रहा कर लिया करो ऐसे चीज में, फोन कर लिया करो. आई थिंक वो ज्यादा बेटर है. है. धीरज जी, हाँ, धीरज जी, आप जो बोल रहे हैं, I mean, even I mean, I was not following it very regularly, but when I saw it, then after that, even I made some phone calls and I talked to people what is happening. exactly. But That is so actually, surprising. What to no, but do? actually, you know what, Dhiraj ji, agar you know somebody is alive, you know that person is alive, and you know he's so accessible that he's meeting people, तो आपको लगता है Exactly. कि जो लोग उसके पीछे पड़े थे वो लोग उसको छोड़ते? Exactly, तो इट्स right? इम्पॉसिबल. एक तो वो अगर एक अगर बात ये है. ऐसा है तो nobody should be knowing about it. Even before तो shouldn't be या saying आई मीन, about it. अगर अगर आप अगर वो उसकी कहता है थ्योरीज तो जो he's उस basically समय, putting him in risk, right? So कोई कोई रीजन जो है ना, कोई लॉजिक स- नहीं निकल रहा है इसका. आज धीरज की जी, बात मैं में बस कोई एंड लॉजिक एंड एक नहीं अनदर निकल एक रहा है. थिंग इज धीरज जी, अगर आप जो रूट है, द कॉज फॉर विच एवरीबडी इज स्टैंडिंग, Fighting, एवरीबडी इज yeah. फाइटिंग, आप उसको ही खत्म कर दो कि वो मरा ही Exactly, नहीं है, right? तो वो Right? खत्म हो गया ना. Exactly. तो इसका मैडम, मीनिंग दैट्स ये क्या व्हाट इज एक्चुअली निकाले क्या ना, है, हैपनिंग. आज सबको आज पागल के बना रहा है मिला कन्वर्सेशन के. का क्या मीनिंग वही. निकाले, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको पर्पस क्या है. No, we कुछ don't have to go in that direction. I एग्जैक्टली think कुछ we have लॉजिक to do नहीं है what इसका. we are doing, We'll have to just and ignore this I today think only. we have to continue doing what we are doing. And Exactly. it's a long wait. We will someday hear what has happened, what will happen to them. And till then, all this will happen. There were many attempts made to stop this movement, stop people who were still standing, talking about it. So this is a desperate attempt, I feel, No, to I don't think ultimately ignore I them. don't think we would to try to stop people unless something changed in between after he came out of the police station. But at least what he was doing before, I'm sure that he was doing it for the cause. After that, if something happened, it might be there. So what I would at least try to prepare myself to just ignore what happened today and continue the way it was till yesterday, and just go with it unless something else comes in. But yeah, I mean, using and going solo and using really targeting family is really a really bad thing. But I'm sure that account is really newly created just for this purpose, and I think Tiger got into it. He shouldn't be leaving, quitting Twitter just because some people are bashing him. If he coming alive, he's giving this kind of news. He should be ready
to take the you know, if you share this kind of news, people will come and bash you, so you should be ready to take the bash. Yep, yep. You cannot just run away. Right. Uh, again, I don't want to kind of demean and make it a little lighter, but आप जो भी हैं मिस्टर उद्धव ठाकरे, अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो मैं आपको ले पाऊंगा, because there is somebody like Uddhav Thackeray in this. Okay, all right, अब आप बाहर चले गए, so thank you so much for that. And Sukhpreet, अगर आप भी अपना कैमरा ऑन कर सकेंगे, I will be able to take you. The reason Animesh is here is, we've already validated in the past and we know him. Anybody new, we really have to have your camera on for the first time. Next time around, we can definitely, have you without the camera. All right. Looks like everybody dropped. Okay, that's fine. Amarji, please, आप क्या कहना चाहते हैं? Hi Varun, Hello, hi जी. everyone. Varun, see, I just want to say one thing. There is no exception or explanation of the rule that you are targeting somebody's wife and children. The same way you cannot disrespect any woman. Whatever explanation you give me, it is not acceptable. There is no anything in the world that will explain these things. These is a very what do you call a sick mentality. Whatever, I don't know what happened yesterday, but second point, some people are so desperate to stop this movement overall. See what is happening right now. The Bollywood movies are declining. A lot of the people of this country are united for SSR. So the pressure that has been created on CBI, this movement actually is making a lot of people jitter. Jittery effects are happening, and this is financially also affecting a lot of people. So they'll do anything to hit below the belt. But whatever explanation in the world you give it, nobody has a right to target children and people of you to and anybody's wife. That is not acceptable, as clear as that. Whether you agree, disagree, don't watch, nor there is no exception to this rule. That's Absolutely. that's what I I agree. wanted to I say, Varun. completely agree. Let other people give. Yes, Sukhpreet ji. Yeah. Hi, Varun. Hi, everyone. Yeah. Hi. So I was actually going through a few comments that I saw in the chat, and I saw people talking about like the people who have actually said something yesterday, and they're not feeling good about it. My only suggestion, and that is the only point that I want to make here, that if you go to their shows, right, and you listen to them and you somehow agree to their points, what they have said in last 6 months, right? So when you agree to them, you go back to their platform time and again, and coming back and talking all bullshit about them. uh, First of all, you are at fault. If you are going to their platform and talking shit about them afterwards, that is your problem, right? If otherwise, being me, if I don't like their point, I have unsubscribed them. That is the simplest way of going about it. And this is very simple that people should understand. I think there's no rocket science in it. Exactly. And that's what I say, right? I mean, there are different news channels. You subscribe to some, you don't subscribe to some. You follow some, you don't follow some. But at the same time, Certainly, you don't certainly. badmouth एक दूसरे का इधर जाके उधर जाके इधर वो मत करें. I think Yeah, yeah, the yeah, moment you yeah, stop, and that's what we're doing for Bollywood right now, right? I mean, Bollywood, we cannot just yeah, go and, pardon my language, but we cannot just yeah, literally pick up every single artist and kill them and they yeah, say, Bollywood is clean. yes, No, the way we yeah, can do it, we won't watch their movie. We won't give any kind of certainly, a single dollar to them, and that's how we will kill them, yeah, completely and completely wipe them off. That's the way certainly, to do it. Do it yes, gracefully, by doing BS all around on social media and all YouTube channels and all that, going in chats and throwing all the nonsense. That will not help. Actually, that shows your, upbringing, and that brings bad name to your family, guys. So all I'm trying to say is, let's create. Yes, there are things that will happen. Not everyone will be on your side. There will be people on the other side as well. Agree to disagree, simple as that, and be nice, and decent. और जहां तक रहा ये वाला जिस कमेंट के लिए जिसके लिए मैंने ये कहा था, छोटा सा लाइव था, अगेन 1 घंटा सवा घंटा हो चुका है, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू इज, गाइस, प्लीज, कल को ये मेरा दोबारा नंबर आ सकता है, किसी का भी नंबर आ सकता है, बट प्लीज
ट्रोल करो, उस बंदे को ट्रोल करो, जितना मर्जी ट्रोल करो, आपको नहीं अच्छा लग रहा, डोंट सपोर्ट देम, please don't get into this, the family nonsense stuff, and because end of the day बहुत hurt करता है। और दूसरी बात, जैसे कि आई एम फॉरगेटिंग किसने बोला, बट एंड ऑफ द डे किसी का नरेटिव है, किसी ने कोई स्टोरी चलाई है या किसी ने कोई भी बात करी है, यू डोंट एग्री टू इट, यू टेल दैट पर्सन डायरेक्टली, फेस टू फेस, डीएम में, पर्सनल कॉल करके आप बात कर लें, कुछ भी कर लें। don't please don't do it on social media इस तरह से। मैं ये नहीं कहता कि obviously the other people are also doing stuff on social media, वो यहाँ पर आके भी चीजें बोलते हैं, अगेंस्ट भी बोलते हैं, तो आप उनको डायरेक्टली करें यार, सिंपल एज दैट। बहुत लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं यहाँ पर सुशांत से रिलेटेड। जैसे किसी ने बोला था कि देयर वाज दिस लेडी क्राइंग, मुझे नहीं पता, अनफॉर्चुनेटली आई हैवंट सीन दैट लाइव इटसेल्फ। मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, इसलिए मैं आई कैन बिलीव दैट people have called, I have so many people who have called on video calls, who've cried in front of me, who've said कि बेटा क्या होगा, सुशांत का कुछ होगा, they've had sleepless nights, there were, I can quote two ladies, आंखों के नीचे उनके गड्ढे पड़े हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इतने महीनों से हम सो नहीं पाए। I know certain ladies जिनके छोटे बच्चे हैं, very young ladies who have small kids, वो ये कह रही हैं कि कई बार ये हो चुका है कि हम लंच बनाना बच्चों का भूल गए, because we were watching this live and we were watching around what is the update around सुशांत। गाइस, यहाँ पर लोग बहुत बुरी तरह से इस इमोशनल, एक कहते हैं ना, एक ये स्पाइडर वेब है जिसमें जकड़े हुए हैं। किसी के इमोशंस के साथ खेलना, आई थिंक दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। प्लीज, अगर मैं वही सबको कहता हूँ कि अगर इफ यू कैन नॉट मोटिवेट और यू कैन नॉट स्प्रेड एनी काइंड ऑफ चीयर, don't demotivate, don't degrade people, don't do anything negative around certain things. Please try and understand that, क्योंकि लोगों का, you know uh, I have really felt that pain. Unfortunately, I'm not fully trained and equipped to kind of motivate people. As much as I can, I still try my best, बट जरूरी नहीं है कि हर जगह एक वो वरुण या एक और कोई लोग ऐसे मिल जाएं लोगों को। there are people who could take wrong steps on such things, so please be mindful of that, is what I always tell them। नहीं आप सोशल मीडिया हैंडल कर पा रहे और आप यहाँ सिर्फ नेगेटिविटी, तो आप यार बहुत सारे और टॉपिक्स हैं उनके बारे में नेगेटिविटी स्प्रेड करें। ये ऐसे वाले जो इश्यूज होते हैं जहां पर किसी की डेथ हुई है, please don't make a mockery of somebody's death, somebody has gone, वो 70 plus year old dad की आंखों में जाके देखो यार, उनकी फोटोग्राफ्स देखो, he deserves a lot of support इस टाइम पे morally। imagine उनकी बेटियां जहां भी कहीं कहीं different places पे बैठी हैं, वो बेचारे अकेले कई बार बैठे होते हैं। yes, I'm sure one of the sisters is definitely taking care, but still they have their own families, they still have their own responsibilities। आप उनका सोचो यार। Please don't make a mockery is all I can say। Please, please, please be nice, be humble, be polite, and please don't do this nonsense for somebody's death, guys। He's gone, Sushant is gone, please respect the dead, please respect him। Anyways, And Varun, you're doing a great job, right? So never get demotivated by all these things. That's what exactly my point was. The only reason that I've come here. You guys are doing a great job. If someone is coming up with some narrative, first it should not come to any other platform. What the other platform is saying, right? If someone is bringing it from there to here, right? That person should not be entertained. My simple point is, yeah, if there is a valid point, if someone has an information which has the proof to it, and he or she is sharing it, great. But if it has no base to it, and you yourself don't like it, and you have just come to mock it on other platform, I would not like to entertain that kind of a person. And being a host, you're doing a great job, Varun. A lot of responsibility is in your on your shoulders as well. So, but anyhow, I've been watching all your shows till now. This is my first time that I've come live, just for the reason that I found those people not very nice to say things about someone where they don't believe in the person. And why do they go to their shows then?
because they somehow want that negativity to prevail. That's what I understand by their mindset. Yeah. No, I really appreciate Sukhpreet, all your comments, but one last comment from my side again. एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि what do you believe, what you my personal belief is of course I have been very vocal about it. I don't want to kind of mince words. If he has proofs, if he has really met Sushant, Yeah, I would love to have चाहे वो मेरे प्लेटफॉर्म तो certainly, again I don't want to make a certainly. joke of this, बट मैं ये Yeah, नहीं कहना चाहता कि मेरे प्लेटफॉर्म अपने प्लेटफॉर्म कहीं पर भी right, प्लीज right, right. प्लीज ब्रिंग And it सुशांत doesn't matter. ऑल ऑफ Doesn't अस, matter. वी रियली Till the वांट। time it is true, यस it doesn't matter. Yeah. यस Yeah. यस, तो अगर वो है तो प्लीज, हम लोगों ने और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत स्लीपलेस नाइट्स निकाली हैं, We'll be the happiest, I think. Yeah. वी विल बी द हैप्पीएस्ट। मैं कहता हूँ यहाँ पर लोगों पे। सुखप्रीत जी, एक चीज Yeah. में बस बोलना चाहता हूँ, वरुण जी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हाँ, हूँ। बोले बोले। प्रॉब्लम क्या होता है सुखप्रीत जी, अगर ये एक नॉर्मल न्यूज होती ना, लाइक कोई भी केस Right. के एडवांस क्या हो रहा है, कहाँ तक Right. जा Right. रहा है, तो Right. नो वन डजंट केयर। Yeah, a जब lot आप of एक ऐसा sentiments are there. स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं क्या बोल But रहा हूँ, मैं मुझे थोड़ा बोलना दीजिए, जब आप जी एक जी ऐसा स्टेटमेंट देते हो, लोगों के इमोशंस उल्टे डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होते हैं कि हाँ एग्जैक्टली। हमारे होप्स फिर से क्रिएट होते हैं। फिर क्या होता है जब लोगों को फिर से पता चलता है कि नहीं, ये लोग तो अपना एजेंडा फैला रहे थे, इनका कुछ प्रोपागेंडा था, ये लोग ऐसे डिसाइड किए हुए थे कि और 2-3 वीक्स चले जाएंगे, बिजनेस मिल जाएगा, नए नए वीडियोस बनाएंगे इस पे। फिर जब लोगों को सच्चाई पता चलती है तो लोगों का ही दिल टूटता है, लोगों को ही इमोशंस को हर्ट होता है। उनका कुछ बिगड़ता नहीं है, उनकी पूरी प्लानिंग है। ठीक है सर, तो हम लोग अगर आंख बंद कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पे अन्याय होना बंद हो जाता है। सो वी हैव टू स्टैंड अप जहां पे गलत हो रहा है। बाकी जो अपने शो पे कुछ भी मसाला देके कुछ बेच रहा है, वो हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां पे इस देश का और देश की जनता का इमोशंस या तो फिर कुछ भी अगर हर्ट हो रहा है, सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहा है, तो उसके लिए अगर प्लेटफॉर्म खड़ा नहीं होगा तो कल के डेट में और एक सुशांत निकलेगा। उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, क्योंकि हमने अपनी आंख कान बंद कर दिया था देख के भी। कल के डेट में कोई अगर इंसान इमोशनल होके उसको लगता है सुशांत हाँ जिंदा है, लेकिन उसको फिर से पता चलता है कि सुशांत नहीं है, ये लोग तो मजाक कर रहे थे, उसको एक हार्ट अटैक आता है, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे? नहीं होंगे ना। लेकिन मैं हूंगा, क्योंकि मैं देख के भी चुप रहा था। ओके। मैं ये लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं देख के भी चुप रहा था। सुशांत आज हमारे बीच में नहीं है क्योंकि उसके चारों ओर जो लोग थे वो चुप रहे थे, उसको सपोर्ट करने वाला कोई था नहीं, उसके लिए आवाज उठाने वाला कोई था नहीं। तो ये जो मूवमेंट चल रहा है ना, सिर्फ उसको जस्टिस दिलाने का मूवमेंट नहीं है। ये मूवमेंट का वही मतलब है कि नेक्स्ट सुशांत कोई आए नहीं, कोई बने नहीं। अनिमेश, तो हम ये नहीं बोल सकते। अनिमेश, मैं आपको 1 मिनट के लिए इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ अभी क्लिक करके आए हैं रईस जी। रईस जी वो सुशांत सिंह राजपूत के जो फार्म हाउस के केयर टेकर हैं, जो जिन्होंने बहुत उनके साथ टाइम स्पेंड किया है। नमस्ते सर, नमस्ते वरुण सर। थैंक यू एक बार फिर से। आप मुझे नहीं पता था, मैं आपको मैं नहीं तो मैसेज कर देता, बट आपने नहीं chat सर, अभी में- जैसा कल भी मुझे कुछ डिस्टर्ब हुआ कुछ मैं थोड़ी देरों के लिए, जैसे ये क्या मतलब क्या हो रहा है सर, ये सुशांत सर के नाम से हर कोई मजाक कर रहा है सर, क्या है क्या चल रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है। हर कोई कुछ उनके नाम पर क्या मजाक बना के रखा है उनको, वो कोई मजाक की चीज नहीं है सर। वो इतना हाई प्रोफाइल केस चल रहा है, और ये ऐसी छोटी छोटी बातों पे जो भी पहले से भी, एक तो पहले भी प्रॉब्लम कम नहीं था कि अभी नया नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है कुछ तो कुछ। हर कोई अपने 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 देश पे अपने अपने पब्लिक अपने अपने नाम के लिए, अपने अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कोई भी आता है सुशांत सर के नाम पर कुछ भी बकवास करता है सर, क्या चल रहा है सर ये। मैं तो इतना परेशान हुआ सर, मैं इतना डिस्टर्ब होता हूँ, हम लोग को इतना बुरा भी लगता है कि ये क्या हो रहा है सर ये सब। अभी जैसे सर ने बताया कि उनके उस वक्त जो सुशांत सर का जब हुआ तो कोई सामने आके बात नहीं, कि आपको तो मैं बता क्या हम लोग क्यों नहीं आए, हमारा प्रॉब्लम था, हमारी हम मजबूर थे सर उस वक्त, हम लोग सामने आके बात नहीं करे। तो ये अभी जो हो अरे रहा है सर, ये हर रईस कोई जी ऐसा। पूरा धंधा बना दिए हैं और कुछ नहीं। इन लोगों को ये बॉलीवुड से कोई अच्छे लोग नहीं है, ये एक दो अच्छे लोग हैं ये जैसे वरुण बॉलीवुड जी से हैं, वो कुछ देखिए, काम। अभी बॉलीवुड की बात है, बॉलीवुड का तो छोड़िए सर, अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो अपने जो वॉरियर बोल के आए हैं और वॉरियर की तरह ये लोग ये कर रहे हैं, और ये जो अपना अपना कर रहा है सर, ये कोई किसी के लिए नहीं खड़ा है सर ये।
अरे सर, अभी किसी को जैसे अभी मतलब ही नहीं है, किसी को मतलब ही नहीं है जो यहाँ इतना पे। वरुण सर जो करते हैं, मैं तो कभी उनके प्लेटफॉर्म पे नहीं आया हूँ। आज मैं कल कल और आज आया हूँ मैं सर। पूछिए तो मैं कभी कैमरे के सामने आके बात ही नहीं किया उनसे कभी भी। और वरुण सर को भी पता है कि मैं सामने आके बात ही नहीं करता हूँ। मैं उनसे भी कांटेक्ट में, उनसे भी जो भी बात करता हूँ, मेरे को जो मेरे दिल को लगता है या मुझे अच्छा है या बुरा लगता है, तो मैं वरुण सर से शेयर करता हूँ मैं। लेकिन जो कल जो हुआ है ना सर, ये बहुत बुरा हुआ है सर, ये अच्छा नहीं हुआ है। राइट ये सर। ये हर कोई सुशांत सर के नाम से मजाक कर रहे हैं, हर कोई उनको मजाक बना के रखे सर। वो मजाक की चीज नहीं है, वो हमारे बहुत करीबी है। और हमने हमारा बहुत एक हम ऐसा करते हमारे एक परिवार का हिस्सा हमने खोया है सर। वही बोल रहा था मैं, रईस जी, आज चुप रहेंगे, कल हमारे साथ होगा और फिर से ये लोग वही करेंगे। वही हो रहा है सर। अभी क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। वरुण सर क्योंकि भी हम लोग आप चुप कुछ करिए रहते हैं, सर ये सब आप। चीजों में मैं हम लोग सिलेक्टिवली चुप रहते हैं। मैं हम लोग को ये पसंद नहीं आता है, हम इसको इसलिए बोलते हैं, वो पसंद आ जाता है, वो चुप रहते हैं वहां पे। हमारी एक कॉमन ग्राउंड कहीं पे है नहीं। अभी मुझे भी कल मैं नहीं, तो एक्चुअल में क्या हुआ मैं मुझे तो बस कुछ इतना पता ही नहीं कहूंगा था। कि लेकिन मुझे कितने मैसेज आने हाँ, लगे रात में 2 बजे 2:30 बजे। मैं तो एक्चुअली मैं देखा नहीं, मुझे सोशल मीडिया पे मुझे बहुत से मैसेज आने लगे इस बारे में। मैं भी हैरान हूँ कि क्या है। तो फिर मुझे लिंक भेजा गया, मैं देखा तो हैरान हो गया कि ये आदमी क्या बात कर रही है, क्या चल रहा है ये हर कोई मजाक कर रहा है। अभी ये देखिए, मैं अभी जस्ट मैं देखा हूं, अभी आप लोग लाइव है तो मैं अभी इसलिए मैं उनसे वरुण सर को मैसेज करके मैं लिंक मंगा कर लिया। प्लीज वरुण सर आप ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने हिसाब से काम करिए नहीं और सर, बस बात जस्टिस के लिए ये खड़िए है, इस सर। टाइम पे नहीं, जस्टिस के लिए तो हम डेफिनेटली रईस भाई हम करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात इस टाइम पे ये है, अ, जैसे अभी आप आए हैं, साथ ही आपको क्वेश्चन पूछने लग गए लोग कि आप, अगेन मुझे नहीं पता मुझे ये क्वेश्चन इवन आपसे पूछना भी चाहिए कि नहीं, बट जैसे वो पूछ रहे हैं कि आप उनके फ्यूनरल पे गए थे कि नहीं, आपके लिए भी क्वेश्चंस करने लोग शुरू हो गए हैं। सलमान ये आवाज आवाज ब्रेक हुआ है सर, क्या बोले आप, क्या क्या बोला आपने? आप सुशांत के फ्यूनरल पे गए थे आप क्या? नहीं, मुझे नहीं जाने मिला क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था। राइट, आई नो उस टाइम और पे लॉकडाउन था, बहुत हाँ, लिमिटेड नंबर और बड़ी कम परमिशन मिल रही थी, वो मैं और उसके लिए परमिशन लेना पड़ता था, जो भी ट्रैवलिंग करते तो वो नहीं मिला मुझे। राइट कोविड का जो एक ये लेना पड़ता है ना, जो या ट्रैवल के अपने सब पास लेना पड़ता है, ई राइट पास। राइट वो मैं उसके लिए बहुत ट्राई किया था लेकिन नहीं मिला मुझे। और लोनावला और मुंबई में 100 किलोमीटर का फासला है, इसके लिए मुझे वो नहीं मिलने की वजह से मुझे जाना नहीं, क्योंकि कर्फ्यू भी लगा हुआ था। और मैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए मुझे, क्योंकि लोकल में ही मुझे मतलब यहाँ के लोकल एरिया भी के लिए जो भी लोकल में चलना है या मार्केट जाना है तो उसके लिए भी मुझे ई पास लेना पड़ता था। या लेकिन दूसरे सिटी में जाने के लिए वो अलग से ई पास के लिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन नहीं मिला मुझे। ठीक है, नहीं नहीं, आप वी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। लोग अभी भी नहीं हट रहे, और मैं अभी भी हैरान हूँ कि तेजस भी, हमने इस टॉपिक को शुरू किया और इसी के बारे में बात कर रहे हैं, और अभी भी आप जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। मैं बिफोर आई कैन ब्लॉक यू, आई रियली वांटेड टू फ्लैश दिस मैसेज, शेम ऑन पीपल लाइक you that you are seriously still kind of talking about such things. So अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। एनीवेज, बट यस रईस भाई, थैंक यू सो मच, आप ज्वाइन किए। मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था यहाँ पर आने का कि गाइस, बस मैं दो दो शब्द बोलने के लिए मैं आया हूँ सर, कि जो हो रहा है सर, आप उन लोगों पे कुछ ध्यान मत दीजिए और उन पे आप भरोसा ही मत कीजिए। ये ऐसा होता नहीं है कभी, इतने लोग हैं। और ये जो ऐसा हो रहा है सीबीआई या ये तो कोई खेल है, मजाक है, ये कोई मजाक तो नहीं बना हुआ ना सर। yep, yep, ठीक है सर, मैं मिलता हूँ सर बाद में। जय हिंद सर। करते हैं बात। थैंक यू सो मच। All right, guys. So, end of the day, Animesh, anything else? Last comment before I end this session, guy. नहीं वरुण जी, वही थोड़ा आप ये हमारे जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, भले ही इस केस के रिलेटेड नहीं तो इन जनरल जो भी ये इश्यूज होते हैं, देश के दूसरे भी इश्यूज होते हैं, तो थोड़ा रेगुलरली अगर आपको टाइम मिलता है और एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म के हिसाब से आप अगर इसको प्रेजेंट कर पाए, Sure. तो वी कैन थोड़ा सा रैशनली सब चीज के बारे में डिस्कस कर पाए और अ, एक कॉमन ग्राउंड निकाल पाए, और जहाँ पे जो गलत हो रहा है वी हैव टू स्टैंड फॉर इट, Yeah. कि किसी के साथ ऐसा गलत ना हो। एक कॉमन डिस्कशन करके क्या सही है क्या गलत है, तो थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। इग्नोर करते रहेंगे तो ये सब बंद होने वाला है नहीं।
हमारी देश ही इतनी बड़ी है कि कोई ना कोई ऐसा तो अपना बिजनेस चलाने के लिए कुछ भी बोलता रहेगा। तो वी हैव टू एक्सपोज इट, इफ मैं वी आर मैं एक्सपोजिंग इट मैं वी हैव मैं टू बस एक्सपोज एक बात कहना चाहूंगा। अब नहीं, एनीवेज मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात हमेशा आप ये कह रहे हैं कि बिजनेस चला रहे हैं, तो मतलब वो विभोर कौन सा बिजनेस चला सर रहा है? आपको ना, मैं अभी अगर इनके पास टाइम हो ना, आपको जो जंगल थ्योरी चल रही है वहां पे आपको पता है ना? हाँ वो क्या क्या हाँ, उसका प्रोपागेंडा क्या है पता है? वो जंगल थियरी में सबको क्या है? एक एक रोल दिया जाएगा। कल के डेट में कुछ भी होता है हाँ। ना, कहीं पे किसी का अरेस्ट होता है, पालघर में और 3 बंदे पकड़े गए, उसका क्या हम्म। हुआ? सीबीआई के सामने, दफ्तर के सामने, उसका जो दूसरा बंदा है, उसका दोस्त है, वो नाम भी मुझे नहीं पता, अक्टूबर 2020 करके उसका फोटो आ गया। इनने क्या रिलेशन बनाया? उसको जो अरेस्ट हुआ है पालघर में, इसीलिए हुआ क्योंकि ये सीबीआई के वजह से सीबीआई में जाके कुछ प्रूफ दिया है। लोगों के सामने ऐसा एजेंडा फैलाया जा रहा है कि हम हम्म। लोग करवा रहे हैं ये। और जो एक एक्टर, उनका नाम मुझे याद नहीं है, एमपी उनका, में जो, एमपी में, हाँ, एमपी में, एमपी में एमपी में। नहीं, और हिमाचल या तो फिर कहीं पे हाँ उनका वही, सुसाइड हुआ हिमाचल था। एमपी में ही है। हाँ, तो अर्जेंटली वहां पे जाने के लिए, जहाँ जबकि इनको मुंबई आके अपना जो मंडे को अटेंडेंस देना पड़ता है, उसके लिए टाइम नहीं मिलता है। बट वो वहां पे गए, और वहां पे जाके उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर दी, और उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया, और वो भी रिलेटेड है इससे। सर इस सब से क्या होता है पता है? ट्विटर पे और यूट्यूब पे एंगेजमेंट बढ़ता है। और एंगेजमेंट किसके लिए चाहिए? धंधे के लिए चाहिए। वरुण जी को मतलब नहीं है, 2 दिन में, नहीं 3 दिन तो, में एक बार आते नहीं तो आते हैं यूट्यूब कर में विवोर कितनी बार आते हैं? क्या? यूट्यूब में विवोर कितनी बार आते हैं? मैं तो देखता हूँ, बाकी बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ मैं, सर जो नहीं आते हैं। ट्विटर में एक ट्वीट, जो भी आपका ये हो रहा है, डिजिटल करेंसी, आपको पता है कि नहीं? एक ट्वीट, एक रिट्वीट, एक भी आप कुछ भी कर रहे हो, आपके जितने सपोर्टर्स एक लाइक करते हैं, एक सब्सक्राइब, सॉरी, शेयर, कुछ भी होता है, सबसे ये होता है। और यूट्यूब में लाइव आने के लिए मसाला भी तो चाहिए, उसको बिल्ड करने के लिए कितना टाइम चाहिए? और आप अगर यहाँ पे विवोर को डिफेंड करने के लिए आ रहे हो ना, तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू से टू यू, या मैं ना बस अभी वही कह रहा हूँ, बैठूंगा तो तीन देखो चार लोगों घंटे का आपके व्यू साथ पॉइंट आर्गुमेंट अलग कर होते सकता हैं। हूँ। देखो लोगों बट के व्यू पॉइंट अलग होते हैं। उसके लिए वही खड़ा होगा सर, जिसका अपना हाँ होश नहीं होगा। ठीक है सर? बिल्कुल। ठीक है, तो आप उसको एटलीस्ट मत डिफेंड कीजिए, वरना मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा जो आपको खराब लगेगा, या तो फिर और किसी को खराब और लगेगा। मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा आपको खराब लग गया तो फिर? सर नहीं अब तो आपस में फिर से तो अब तो यहाँ वही तो गलती करते वही हैं। मैं तो कह रहा तो हूँ कि तो ऐसा कुछ ना आप कहें, तो ऐसा सर कुछ एक ना एक बात कहें। सुन लीजिए। तो हाँ, ये धर्म युद्ध के कौन से साइड पे आप हो, वो आप भी सबको, डिसाइड मेरे को करें पता किस चल साइड हो जाएगा। आप। मैं आप मैं जो साइड पे हूं ना, वो अभी मैं आधे घंटे से बोल रहा हूँ, हर अन्याय के अगेंस्ट, हर मैं झगड़ा नहीं अन्याय के करना, अगेंस्ट। छोड़िए। वैसे समझ भी गए? आज वो जो किया है उसके बाद तो सबका मुंह, हम, मेरा ही खुद का मुंह बंद है। मुझे तो खुद को आप नहीं तो समझ मेरे में आ को रहा क्या 5 मिनट किया से क्वेश्चन किए जा रहे हो। मैं तो पूछा, मैं तो नहीं नहीं, क्लियरली देखो दिया। साफ बात है मैं अनिमेश, नहीं, मेरा वरुण जी नहीं, सब कोई हर हाँ, अन्याय के अगेंस्ट है। जहाँ मैं पे हम लोग एक फैमिली के अगेंस्ट कुछ ट्वीट आया, हम लोग सबने उसको निंदा किया। एक मृत आत्मा जो कि हमारे बीच नहीं है, उनकी बारे में ये सब थियरीज लाना कितनी कहाँ तक, कौन सी एक्सटेंट तक ये सही भाई सही सही थ्योरी भी उसी ने लेके वही लेके आया था। उसके बाद भी है? उसको बहुत लोगों ने कहा था, फिर सर क्या फायदा है? मैं यहाँ पे कोई विवोर का एडवोकेट से मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। जो मोटिव था इस डिस्कशन का, मैंने कर दिया। आप अगर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म में या तो पर्सनली आके बात करना चाहते हो, वी कैन डू दैट। यहाँ पे मैं वो करना नहीं चाहता। मेरे लिए वो बंदा लास्ट, सही नहीं है तो सही हाँ नहीं है, लास्ट बस। अभी उज्जवल जी नहीं, अभी सबकी लास्ट अलग ज्वाइन अलग किए। थिंकिंग है। आई एम गोना टेक द फाइनल कमेंट बिफोर वी एंड दिस, बट आपस में हम लोग, मैं फिर से ये एक और एग्जांपल है, बिफोर आई टेक उज्जवल जी, एक और एग्जांपल मैं लाइव अभी देख रहा हूँ। एंड ऑफ द डे हम आपस में फिर भी किसी ना किसी तरह आर्ग्यूमेंट, यस पोलाइटली हम डिस्कशन कर सकते हैं, पोलाइटली हम, वी कैन बी ऑन एनी साइड, डजंट रियली मैटर। विभोर सही है कि विभोर गलत है, that should not be the question. That is what the we have. वही तो सर, दैट शुड नॉट बी द क्वेश्चन आफ्टर एवरीथिंग हैज हैपेंड। Yeah, जो right. समझदार है उसके लिए इशारा बहुत है। और चलो जो फिर भी क्वेश्चन करता है, तो बहुत पोलाइटली मैंने यहाँ पे डिस्कशन एंड कर दिया, बिना आर्गुमेंट का, वो आपको भी पता है। चलो उज्जवल जी, एनी लास्ट कमेंट? अभी आपने ज्वाइन किया है, आप क्या कहना चाहते हैं? Hey guys, Jai Hind to you, all of you. हेलो सर। Yeah, yeah. जय मैं हिंद सर, अपने आप जय को हिंद, रोक जय नहीं हिंद। पाया. Actually, I was in the middle of the shower.
and this thing was playing in my room, and I just grabbed it. I just came out and grabbed it. I had to express myself. See, I also went to that channel yesterday just to basically to wish, everybody okay, happy new year and all that, and let's keep on going strong types. But then I dropped off after about 5-7 minutes. देखो बंधुओं और जो भी इस चैनल को सुन रहा है, आई मीन आई वुड लाइक टू प्लीज 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 हाथ जोड़ के बोलता हूँ, भैया हमारे सनातन शास्त्रों के हिसाब से a soul takes about 12 months to complete its journey to Vaikundam. Okay, and there are various stages to this journey, and we all have to do our karma or action, like prayers or whatever we need to do. We all must do it in the aid of easing that journey, making that journey convenient to Vaikunt. So please, 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 or family ko please, guys, we must leave them alone. The kind of trauma which a family member gets, a sister who's lost a brother or a father who's lost his son, my God, it's unbearable, unbearable. I mean, I tell you, my own father in 65 war was MIA for 2 days, because his entire regiment, his entire platoon was wiped out. Only he and a small young soldier of 18 years old were left. Then finally they were rescued after on the third day. So in between, like when his name was mentioned under MIA, imagine the plight and the entire family. Those days were Wow. This सर was इनको तो अपनी फैमिली की पड़ी नहीं है, दूसरी की फैमिली की क्या ही सोचेंगे, उज्जवल जी डिस्कनेक्ट हो गए। इनको अपनी फैमिली की फ्लाइट की पड़ी हुई रहती, अपना बाप जब sir, परेशान होके 30 दिन जाके मुंबई में इसके उसके सामने हाथ फैला रहा था, तो इनको थोड़ी सी अक्कल आती ना। all right. Animesh, let Jaldi is back. बिल्कुल सर, मैं बस एक एक सिंसियर एक हाथ जोड़ के सबसे प्ली करता हूँ, प्लीज लेट्स लीव द फैमिली अलोन. They need time to cope with this loss, and it's not a ordinary loss. एक जवान बेटा घर का जाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है सर, बहुत बहुत बड़ी बात होती है. Yeah. तो मैं विभोर से भी और सबसे पूरी दुनिया से जो भी इस लाइव को देखता है और हमसे जुड़ा हुआ है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम अपने कर्म ऐसे करें कि उनके ऊपर अगर किसी का कर्जा है तो वो हम उतारे अपने कर्मों से. That is what our Shastra tell us. So let's please and maintain our peace. Yes. We are all here to help each other, motivate each other, and fight this fight. Yeah, this fight is going to be long. Very Yeah, long. it's going to be a long, drawn-out fight till that last nail is put in the coffin. Yeah. So we must be strong and we must make each other strong. Anna, Absolutely. please. Thank Thank you you. very much. I just Thank you had so much, this to sir. share. Yes. So, guys, एक Thank बार you, फिर man. से, just to kind Yeah. of summarize and just to make sure we all are on the same page. Please, आप किसी से भी disagree करें, you have all the rights, but please don't bring the family, don't bring kids into all this muck. It's not really important. It's really not even relevant कि हम family को लेके ऐसा कुछ करें. So please, again, this is not to kind of endorse, support. Yes, Saffron, I'm sure he's also kind of in a different mindset right now because of all the nonsense that is happening, but I'm sure he has a very strong skin, so he will come out strong. End of the day, चाहे वो Saffron हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, किसी के लिए भी, let's not wish bad for them, for the family. If you don't like someone, you have all the rights to troll them. Support ना करें, सब चलेगा, but please let's not get into this dirty side of the thing. So on that note, एक बार फिर से thank you so much. We'll talk soon. Hopefully sense prevails and we get back to some kind of normal movement. नया साल आ रहा है. Let's not get into this dirty end of the year. Yes, already 2020 बहुत ही बुरा साल रहा है सबके लिए. So let's hope for the best for everyone in next year. सब लोग अच्छे खुशी से अगले साल में जाएं and we get some kind of justice for a lot of people. Sushant, Disha, Jia, Devi, everybody needs a closure. We all need a closure. So let's work on that. Let's spread a little bit of cheer, a little bit of happiness, a little bit of positivity. So on that note, thank you once again. Take care. And thanks everyone for joining. Thank you, Sukhpreet, Animesh, Ujjwal, every